It is a technique of calculating, computing the various quantity and and the and the expected expenditure to be incurred on on a particular work and project. Need for estimate. Estimate is carried out to fulfill the following needs. It gives the idea of cost of the work hence help in deciding the feasibility of project. It gives the idea of time required for completion of project. It gives the idea of material quantity required for completion of work. It helps in inviting the tender for the project. It helps in controlling the expenditure on project. It helps in evaluate where there is any benefit to execute the project. Data required for preparing the estimate. uh, a drawing specification or rate. Drawing specification or rates. Drawing में हो गया plan, section, elevation, location, dimensions. Specification, general specification, detail specification. General, nature, class, quality of work and material. Detail में quantity, proportion, workmanship, method of working unit, rate of all item. दिस इज रेट मालूम होगा। तो हम लोग जान रहे हैं डाटा रिक्वायरमेंट होता है हमारा जब एस्टिमेशन को प्रिपेयर करते तो ड्राइंग स्पेसिफिकेशन और रेट। ड्राइंग में हमारा प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, लोकेशन और डायमेंशन दिया रहता है। और स्पेसिफिकेशन हमारा दो टाइप का होता है, जनरल और डिटेल। जनरल स्पेसिफिकेशन में हम लोग नेचर, क्लास, क्वालिटी ऑफ वर्क एंड मटेरियल जान लेते हैं। हमारा डिटेल स्पेसिफिकेशन में क्वांटिटी, प्रपोर्शन, वर्कमैनशिप, मेथड ऑफ वर्किंग, ऑल डिटेल्स आर अवेलेबल इन डिटेल। स्पेसिफिकेशन रेट रहता है यूनिट रेट ऑफ ऑल आइटम्स, मैन पावर, मटेरियल और मशीन से 3M के नाम से भी जाना जाता है, मैन पावर, मटेरियल, मशीन। ठीक है, ओके। टाइप ऑफ एस्टिमेट्स, देयर आर टू टाइप ऑफ एस्टिमेट। अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट, इसको और भी नामों से जाना जाता है, रफ, एब्स्ट्रैक्ट और प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट के फर्दर डिवीजन होते हैं, प्लिंथ एरिया मेथड, क्यूबिकल रेट मेथड, यूनिट रेट मेथड, टिपिकल बे मेथड। डिटेल एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस मेथड। ठीक है, डिटेल एस्टिमेट का होता है, रिवाइज एस्टिमेट हो गया, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट हो गया, रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अब अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट की बात करते हैं। फॉर कैलकुलेटिंग अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ अ वर्क, नो डिटेल्ड नॉलेज इज रिक्वायर्ड एंड इट कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ practical knowledge. It is done to obtain administrative approval of the project. It helps in deciding the financial aspect of the project. So cost of construction is 1300 रुपया पर स्क्वायर फीट है और प्लॉट एरिया दिया है 3000 स्क्वायर फीट। नंबर ऑफ स्टोरी 3 है। बिल्ट अप एरिया फर्स्ट फ्लोर का 80%, सेकेंड फ्लोर का 85%, थर्ड फ्लोर का 90%। ठीक है, अब हमें टोटल कॉस्ट निकालना है हमारे इस कंस्ट्रक्शन में कितना लगेगा। तो हमारे टी सब का परसेंटेज को एक साथ ऐड कर दिए, फिर 3000 स्क्वायर किलोमीटर है पर 3000 स्क्वायर फीट, और दिया है हमारा यूनिट रेट दिया है 1300। सबको मल्टीप्लाई करेंगे 99.45 लाख हमारा होगा खर्च इस कंस्ट्रक्शन में। अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट कैन बी मेड बाय फॉलोइंग मेथड। प्लिंथ एरिया मेथड। अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट क्या था, प्लिंथ एरिया इनटू रेट ऑफ प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया built up covered area of a building measured at a floor level of any story। plinth area क्या होता है, the built up covered area of a building measured at floor level at any story। plinth area, plot area। ठीक है, अब एज पर IS 3861/2002, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ प्लिंथ एरिया फॉलोइंग शैल बी इंक्लूडेड, एरिया ऑफ वॉल एट द फ्लोर लेवल एक्सक्लूडिंग प्लिंथ ऑफसेट इफ एनी, shaft for sanitary, water supply installation, electrical installation, firefighting, air conditioning and light, staircase in case of open veranda with parapet, 100% area for the portion pro- protected by projection above, 50% area for the projection, क्या था, 50% area for the portion unprotected by projection। In case of for the purpose of plinth area following shall be included, area of wall at the floor level excluding plinth offset if any, shaft for sanitary, water supply installation, electrical installation, firefighting, air conditioning and light, staircase. In case of open veranda with parapet, 100% area for the portion protected by projection above, 50% area for the
for the portion unprotected by projection above 100% of area of balcony protected by projection above 50% of area balcony unprotected by projection above. In case of alcove made by cantilever slab, 25% of alcove of height 1 meter, 50% of alcove of height 1 से 2 meter, 100% of alcove of height greater than 2 meter. वॉल का एरिया फ्लोर लेवल पर इंक्लूड करना है. ऑफसेट मीन्स गैप. अगर गैप दिया हुआ है तो वॉल का एरिया इंक्लूड नहीं करना है. मतलब प्लिंथ के पोर्शन के बाहर अगर वॉल बनी है तो उसको इंक्लूड नहीं करना है. साफ्ट मतलब ओपनिंग गिवन फॉर अ पाइप्स टू बी कैरिड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. ठीक है. साफ्ट क्या था? साफ्ट मतलब ओपनिंग गिवन फॉर पाइप्स टू बी कैरिड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. घर के अंदर बनी स्टेयर केस इंक्लूड है, पर घर के बाहर बनी स्टेयर केस को इंक्लूड नहीं करना है. ठीक है. अगर ओपन वरांडा विद पारापेट अगर ओपन वरांडा विद पारापेट ऊपर से कवर है तो इसको 100% इंक्लूड करना है. अगर ऊपर से कवर नहीं है तो 50% इंक्लूड करना है. अगर बालकोनी ऊपर से कवर है तो 100% इंक्लूड करना है. अगर ऊपर से कवर नहीं है तो 50% इंक्लूड करना है. एल्कोव जनरली इंडिया में नहीं मिलते. वॉल में कोई डिप्रेशन बना रखा है तो इसको एल्कोव बोलते हैं. जैसे फोर्ट में बने रहते हैं. अगर ये एल्कोव 1 मीटर हाइट का है तो 25% इंक्लूड करेंगे. 1 से 2 मीटर हाइट का है तो 50% इंक्लूड करेंगे. और 2 मीटर हाइट से का है तो 100% इंक्लूड करेंगे. एक्सक्लूडिंग प्लिंथ एरिया ऑफ लॉफ्ट, एरिया ऑफ आर्किटेक्चर बैंड और कॉर्निस, एरिया ऑफ वर्टिकल सन ब्रेकर, ओपन प्लेटफॉर्म टेरेस, ओपन स्पायरल और सर्विस स्टेयरकेस, एरिया ऑफ मल्टी मशीन्स रूम्स टार्स डोम्स एबव टेरेस लेवल. एक्सप्लेनेशन. ओपन कैंटिलीवर को नोट इंक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया. ठीक है. Carpet area, the covered area of the usable space of room at any floor is termed as carpet area. The covered area of the usable space of room at any floor is termed as carpet area. It is measured between the wall to wall within the building. It is the sum of actual area with which can be carpet. ठीक है. कारपेट एरिया, कॉलम एंड अदर इनसाइड कंस्ट्रक्शन नॉट इंक्लूडेड इन कारपेट एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो कारपेट एरिया में हम लोग कॉलम और अदर इनसाइड कंस्ट्रक्शंस नॉट इंक्लूडेड इन कारपेट एरिया. देखो यहाँ पर करा यूजेबल स्पेस वही होता है जिसमें हम लोग मूव कर सकते हैं वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एनी रुकावट की. तो हम लोग उसे कारपेट एरिया के अंदर करेंगे. प्लॉट एरिया. ठीक है. फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन कारपेट एरिया. नॉट इंक्लूडेड इन कारपेट. वॉल एरिया सही बात है, वॉल को नहीं कर सकते हैं. वारांडा, कॉरिडोर, पैसेज, एंट्रेंस हॉल, पोर्च, स्टेयरकेस, स्टेयर कवर, लिफ्ट शाफ्ट, बाथरूम, मशीन रूम, किचन एंड पेंट्री, स्टोर रूम, कैंटीन, एसी डक्ट, शाफ्ट फॉर सैनिटरी वर्क. Plinth area is 10 to 20% more than carpet area. Carpet area. Plinth area not included in carpet area. Type of building. Office 60 to 70% of plot area. Residential में 50 से 65% of plot area. Floor area. It is the plinth area excluding area of wall. Floor area. Plinth area minus wall area. Setback area. Setback is the minimum open space required around any building. The purpose of providing setback area is that the construction should be far away from the road, any water body, any nearby construction. सेटबैक एरिया कह सकते हो उसको. जैसे कि ये हमारा एक इनसाइड है और ये हमारा प्लॉट एरिया है और प्लॉट एरिया के बगल में हम लोग मतलब थोड़ा सा एरिया देते हैं ना. जैसे ये इसमें हमारा कंस्ट्रक्शन होना है और कंस्ट्रक्शन के चारों साइड ये हमारा प्लॉट एरिया है. इस स्पेस को हम लोग कहते हैं सेटबैक. इस इतना सा जो स्पेस दिया गया है इसको सेटबैक कहते हैं. ठीक है. सेटबैक इज द मिनिमम ओपन स्पेस रिक्वायर्ड अराउंड एनी बिल्डिंग. अराउंड एनी बिल्डिंग around any building minimum space required around any building. The purpose of providing setback area is that the construction should be far away from the road, any water body, any nearby construction. ठीक है. Circulation area का area that is helpful in movement of people through the building. Circulation मतलब ये होता है कि घूमने फिरने का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से मूवमेंट हो सके.
area that is helpful in movement of people through the building, around the building or between the building is termed as circulation area. कहते हैं circulation area that is helpful in movement of people through the building, around the building or between the building is termed as circulation area. जैसे lobby हो गया, corridor हो गया, stairs हो गया, lift हो गया, landing etc. These are classified into two category. Vertical circulation area मतलब स्टेयरकेस और लिफ्ट है. हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन ऐसे कॉरिडोर, पैसेज, बालकनी, वरांडा, लॉबी एक्सेट्रा. Vertical circulation area are approximately 3% of plinth area. It is very important to learn that and keep in mind. Vertical circulation area is approximately 3% of plinth area. Horizontal circulation area is 7% of plinth area. देखो यार, horizontally movement most of the people in the buildings is very more because most of the people are move in corridor, lobbies and passage and balcony etc. The horizontal circulation area. So इसीलिए horizontal मतलब circulation area 7% ऑफ प्लिंथ एरिया है और वर्टिकल सर्कुलेशन में 3% है. ठीक है, वर्टिकल कम रहता है इसलिए उसका 3% है. ठीक है. फ्लोर एरिया रेशियो कहता है टोटल फ्लोर एरिया अपॉन टोटल प्लॉट एरिया. फ्लोर एरिया रेशियो कहता है टोटल फ्लोर एरिया अपॉन टोटल फ्लोर एरिया अपॉन टोटल प्लॉट एरिया. ठीक है. फ्लोर एरिया इक्वल टू 1000 स्क्वायर मीटर. ठीक है. फ्लोर एरिया दिया है 1000 स्क्वायर मीटर, प्लॉट एरिया दिया 2000 स्क्वायर मीटर. तो फ्लोर एरिया रेशियो 0.5 है. ठीक है. इफ एवक इज ऑफ 4 स्टोरी, व्हाट इज फ्लोर एरिया? अब इस केस में कह रहा है कि फ्लोर एरिया क्या होगा. फ्लोर एरिया क्या होगा यदि हमारा इफ द एबव कंस्ट्रक्शन इज और 4 स्टोरी, 4 स्टोरी बने. 1 स्टोरी का दिया है 1000 स्क्वायर मतलब फ्लोर एरिया में अगर 4 स्टोरी बना देगा 4 से मल्टीप्लाई 1000 2 आ जाती है. की vehicle contained method, it is more suitable to be applied for multi-story building. Approximate cost volume into cubical rate. This method is most accurate in approximate estimation method, unit rate method. In this method, estimate is made by considering the unit rate of different item, approx cost, number of units into unit rate. Type of building, school building, unit is a classroom, bench or student, hospital, bed, theater, stadium, water tank, ventilators, later bridge span. Typical way method. In this method, estimate is made by considering the cost of bed in parent space. This method is generally used for the construction of bridge. This method is generally used for the construction of bridge, including in plinth area, shaft for sanitary, etc., staircase, open veranda with parapet, balcony protected by projection above alcove, excluding in plinth area of loft, आर्किटेक्चर बैंड ठीक है. वर्टिकल सन ब्रेकर, एरिया ऑफ वर्टिकल सन ब्रेकर. ठीक है. ओपन स्पेस, स्टेयर केस, ओपन प्लेटफॉर्म, टेरेस और एरिया ऑफ मल्टी सब प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं करते. ठीक है. lump sum. While preparing an estimate, it is not possible to work out the detail of petty items insignificant with respect to civil engineering. Hence, the lump sum value is considered in contingency 3 से 5 or foreseen or incidental. It is unforeseen or incidental expenses which cannot be predicted prior to the execution of project. Example, severe accident, specialist visit on site, work charge establishment, 1.5 से 2% of the project cost. During the execution of the project, certain service are required, expenses of which is paid from work charge stabilization. Example, watchman, secretary, camera, supervision, tools and plants. 1 से 1.5% of project cost. It is the cost of tools and machines purchase higher for the execution of project. Departmental cost engineering for 10 से 15% of project cost. It is the cost of engineering for certain work like designing, planning, supervision, etc. Sanitary and water supply 8% of project cost. Laying of pipes, disposing water out of the plant. Electrification 8% of project cost for lighting, etc. These lump sum value can also be applied in our day-to-day life. ठीक है. Prepare an approximate estimate of plinth of building with with total plinth area of all
building is 5,000 square meter using ठीक है cost of water supply 8% of cost of building is cost of electrification at 8% of cost of building ठीक है cost of architectural features is on the cost of building ठीक है cost of contingency 3% of supervision charge at 8% of total cost ठीक है cost of water supply the detailed estimate निकाल दिया cost of electrification cost of architecture cost of contingency निकाल दिया total cost detailed estimate. It consists of preparing the estimate in two stages. In the first stage, working of different quantities of item of project is carried out. ठीक है ये क्या कहते हैं डिटेल एस्टिमेट कहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द एस्टिमेट इन टू स्टेज फर्स्ट इन द फर्स्ट स्टेज वर्किंग ऑफ different quantity of item of project is carried out. In the second stage, cost of each item is worked out. Quantity of item is required in form of measurements. The quantity of item is required. Quantity of item is reported in form of measurement sheet, and the cost of item is reported in form of abstract sheet. ठीक है ये format है of measurement sheet, serial number, description of item, description of item number, length, width, height, total quantity, remark. Format of abstract serial number, description of item, quantity, rate, cost, remark. Total actual cost equal to quantity and rate of item. This method is more reliable. This detailed estimate is required for technical sanction. This method is more reliable. This detailed can be made by any of the following method. Revised estimate method. It is done when cost of work exceed by 5% of original sanction cost, or when cost of work exceed 10% of administrative sanction. Revised estimate कब जरूरी है? It is done when cost of work exceed by 5% of original cost. ओरिजिनल सैंक्शन कॉस्ट अगर हमारा 5% से ज़्यादा मतलब एक्सीड कर रहा है तो ओरिजिनल सैंक्शन कॉस्ट से तब हम लोग रिवाइज एस्टिमेट करेंगे. और फिर दूसरा कंडीशन व्हेन कॉस्ट ऑफ वर्क एक्सीड 10% ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन, और 10% एक्सीड करेगा जब हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन से, तो उस समय भी हम लोग रिवाइज एस्टिमेट करेंगे. सप्लीमेंट्री एस्टिमेट क्या था? इट इज फ्रेश डिटेल्ड एस्टिमेट इन एडिशन टू the original sanction estimate prepared when additional work is also to be carried in the project. The abstract of cost shows the amount of original sanction estimate and supplementary amount for which the approval is required. ठीक है, the abstract of cost shows the amount of original sanction estimate and supplementary amount for which the approval is required. Revised supplementary estimate. It is used when there is deviation in material design and change in construction or item of work which require both revise and supplementary estimate. Annual repair and maintenance estimate. This estimate is used for repair and maintenance of a structure like painting, whitewashing, polishing, filling the leakage, pet holes, repair, etc. Complete estimate में cost of land, legal expenses, contract between owner and contractor, main cost of contract जैसे labor, material और supervision, contingency cost, engineering cost, water supply and sanitation, electrification cost. ठीक, administrative approval. For any project to be executed by department, approval from competent authority is required with respect to the cost of work on the basis of approximate estimate, and it is termed as administrative approval. Thus, administrative approval denotes the formal acceptance by the administrative department for proposal of in, incurring expenditure sanction. Expenditure. It is done by financial department in which it allocate the required fund for the execution of expenditure sanction. It is done by financial department in which it allocates the required fund for the execution of work. ठीक है. Technical sanction after approval.
After approval of administrative and expenditure sanction, the detailed estimate of project is made for technical sanction. After approval of administrative and expenditure sanction, the detailed estimate of project is made for technical sanction. Schedule of rate, list of rate of all the item like labor, material, transportation, etc. are mentioned in a book which is known as schedule of rate book. It is prepared by PWD or CPWD. It is of following type: CSR common schedule rate, SSR state schedule rate, TSR district schedule rate. ठीक है, degree of accuracy as per IS 1200. ठीक है, dimension shall be measured up to 0.01 मीटर या 1 सेंटीमीटर. That is accuracy है, ये हमारा dimension shall be measured. If it is more than 25 meter, it is measured up to 0.1 meter. 0.1 meter. 0.1 meter. Area shall be measured up to 0.01 meter square. Volume is measured up to 0.01 meter cube. Mass shall be measured up to 1 kg. Woodwork shall be measured up to 0.002 meter cube. Reinforcement shall be measured up to 0.005 meter. Thickness of slab projected outside the beam or column shall be measured up to 0.005 meter. 5 mm. जो चीज़ जितनी कॉस्टली होगी उतनी ही ज़्यादा प्रिसाइजली मेजर होगा. Type of work according to cost. Type of work can be classified into three types on the basis of cost. Petticoats. Petty work क्या होता है? Cost. Petty work cost less than 15,000. Minor cost. Minor work क्या होगा? Cost 50,000 से 2 लाख. Major work के लिए cost greater than 2 लाख. ठीक है, अब इसमें specification क्या होता है? It is used to provide the description of work required to prepare the estimate. These specifications are of following types: general specification or detail. General specification, it provides general description of various item of work. It specifies material quantity, proportional material, ठीक है, plinth area 200 prolonged. It gives general idea of work. It is required to prepare general estimate. It gives general idea of work. It is required to prepare general estimate. Detailed specification. It provides detailed description of various item of work. It specifies quantity of material, workmanship to be adopted. Plinth area हो गया. Concrete flooding, lime concrete और cement concrete. It gives nature and class of work. It is required to prepare detailed estimate. यूनिट ऑफ मेजरमेंट. सारे यूनिट याद रख पाना थोड़ा मुश्किल है, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है जिससे सारे यूनिट खुद निकाल सकते हैं. मास वर्क, वॉल्यूम वर्क, मीटर क्यूब मीन्स क्या था? बल्क मीन्स बल्क में काम हो रहा है. सैलो एंड थीन सेक्शन के लिए स्पेसिफाई वन डायमेंशन इन मेजर इन मीटर स्क्वायर. डीपीसी और प्लास्टिक. लॉन्ग एंड थीन वर्क के लिए स्पेसिफाई टू डायमेंशन इन मेजर इन मीटर. ठीक है. रेलिंग, फेंसिंग, पाइप, रनिंग मीटर. ठीक है. पीस वर्क एंड आइटम वर्क नंबर, पर्टिकुलर और आइटम यूनिट. अर्थ अर्थ वर्क इन एग्जामिनेशन, अर्थ इन प्लेन, अर्थ वर्क इन फाउंडेशन, अर्थ वर्क इन प्लेन. अर्थ वर्क इन एग्जामिनेशन यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्यूबिक मीटर में मेजर करेंगे, और यूनिट ऑफ पर परसेंट क्यूबिक, कितना परसेंट आपने काम किया उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट किया जाएगा. अर्थ वर्क इन फिलिंग एंड फाउंडेशन ट्रेंच क्यूबिक. अर्थ वर्क इन फिलिंग इन प्लेन क्यूबिक पर क्यूबिक. ठीक है. लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन क्यूबिक. अर्थ वर्क इन एग्जामिनेशन. ठीक है. तो लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन क्यूबिक हो गया पर क्यूबिक मीटर. सीमेंट कंक्रीट इन लिंटल क्यूबिक. उसके लाइम कंक्रीट इन रूफ ट्रेसिंग थिकनेस स्पेसिफाई स्क्वायर मीटर में. लाइम कंक्रीट
सीमेंट कंक्रीटिंग में ठीक है क्यूबिक आरसी सनसेट स्पेसिफाई विथ एंड हाइट डैम प्रूफ कोर्स डीपीसी स्क्वायर मीटर में ब्रिक मोडेशन क्यूबिक में थीन पार्टीशन वॉल स्क्वायर मीटर ठीक है डोर एंड शटर डोर